Good morning, everyone. Welcome to the last morning session of the day. We'll have Nikun sir with us who will be taking this session. Good morning. I hope you all can hear me. Please write yes in the chat if you can hear me and see me clearly. Okay, great. Thank you. Thank you for the confirmation. Great. Nikun sir, I've sent you a request to join the stage. Please accept that. I hope you can hear me and see me clearly. Yes, morning Anuj. Am I audible? Yes, sir, you are clearly audible. Just give me a minute. I just share the screen that we are doing. Sure, sir. That's great, Rajatji. If you are booking profits in all your sessions, that's great. We'll start the session in next 1 minute. Feel free to drop your queries in the chat. अगर आपके queries यहाँ answer नहीं हो रहे हैं तो feel free to drop them on Stockholm. We'll be happy to answer. The morning session starts with the support resistance. We'll share for all the indexes, important news. Then we'll move towards the stock updates, stocks on radar, and then if we have any trade, we'll give or not, or else we'll move with the stock queries. So Nikun sir, we are all set. Handing it over to you. Sure. Good morning, Anuj. Good morning, everyone. Welcome to the morning session, the final one for the week. And today there's a major event at 10 a.m. In the morning. So there's a RBI bi-monthly policy outcome. So whatever the governor decides whether they cut rate, the repo rate by 25 basis points or not, or their commentary, what they say, जो आगे का आउटलुक क्या है गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 2-3 years, what is the CPI inflation that they are comfortable with. So उनकी commentary would be more important than the policy stance. As of now, market is expecting a 25 basis point cut, or it has priced in that 25 basis point cut. You never know, but as of now 25 basis point जो repo rate cut की expectation है. So we'll see how it pans out at 10 a.m. once the RBI speech starts, and more importantly, जो commentary रहेगी, that would be more important than the rate decision as of now. So what their outlook going forward for next 3-4 months, and the inflation, जो CPI inflation जो उनका target है, what are the targets? So accordingly, they've already given a few liquidity measures. जहाँ पे I guess 3-4 months back they cut the CRR. Then I guess 1 month back they made an OMO, that is open market operation, wherein they infused further liquidity via 60,000 crores worth of bond buying. So and even in the budget they have increased the tax slab, so which they are working all on the positive side. So let's see what the outcome is. Now coming back to markets relatively flattish है अभी. निफ्टी की बात करें तो नीचे से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रिकवरी आई है. 22,800 का लो करके 23,800 ऊपर में 3 दिन पहले हाई किया था, तो 1000 पॉइंट की रैली आई है. बट जब तक अभी भी एक रेंज में ही है. 23,333 23,333 इज वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर निफ्टी इमीडिएट टर्म में. मतलब 6-7 दिन का अगर ट्रेडिंग पर से है तो 23,333 इज वेरी क्रूशियल. अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो द इंडेक्स कैन करेक्ट टुवर्ड्स 23,000 एंड 22,800, जहाँ पे जो स्विंग लो बनाया था. और जब तक उसके ऊपर है तो बायस साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा, और फ्रेश लेग ऑफ मूवमेंट ओनली कम अबव 22,000 23,800. उसके ऊपर निकल जाता है क्लोजिंग बेसिस पे. आज वीकली क्लोजिंग भी है, एंड सो आज का क्लोजिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट going forward. So 23,800 is immediate hurdle point. 23,333 जब तक उसके ऊपर है, bias would be पॉजिटिव टू साइडवेज कंसोलिडेटिव रहेगा. उसके नीचे अगर क्लोज आता है तो 23,000 and 22,800, these are the levels, key levels that you should be working with on Nifty. As of now, bias is positive to range bound. और 23,800 के ऊपर निकल जाता है तो फ्रेश लेगा मूव टुवर्ड्स 24,200 and 22,400. 200 and 400 cannot be ruled out going forward. So ये थे निफ्टी के लेवल्स. एज ऑफ नाउ फ्लैटिश चल रहा है, अवेटिंग द मेजर आउटकम.
तो जो रेट सेंसिटिव इंडेक्स है दैट इज बैंक निफ्टी, कल रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस देखा गया था वेयर निफ्टी वाज डाउन by 0.2%. Bank Nifty was holding their fort and mainly led by HDFC Bank, Kotak Bank and ICICI Bank. ये तीन major banks है which is keeping Bank Nifty afloat and holding the crucial 50,000 mark. जो 3 दिन से after the sharp rally and a gap up on Wednesday, the index is consolidating in that 500 points. यहाँ पे 50,000 के आसपास 50,100 के आसपास सपोर्ट आता है, ऊपर में 50,500 555 इज द हर्डल पॉइंट एज ऑफ नाउ. तो एक 500 पॉइंट का रेंज इन बैंक निफ्टी, बट जब तक 50,000 के ऊपर है बायर्स शुड बी पॉजिटिव. एंड अगर आज कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाता है विद रिगार्ड्स टू द पॉलिसी, तो रेट सेंसिटिव इंडेक्स व्हिच इज बैंक निफ्टी एंड इवन द फाइनेंशियल फिन निफ्टी है, दे शुड सी सम पॉजिटिव अपटिक. एंड डिपेंडिंग ऑन द कमेंट्री, अगर ऊपर में 50,550 50,555 अगर निकल जाता है तो अनदर 500 पॉइंट 600 पॉइंट की जगह बन जाती है बैंक निफ्टी में. तो जब तक बैंक निफ्टी का सम अप करे तो 50,000 इज इमीडिएट सपोर्ट, नीचे में 49,800 इज रिलेटिवली थोड़ा सा 7-8 डेज का टर्म के हिसाब से सपोर्ट है, और ऊपर में 50,555 इज इमीडिएट हर्डल पॉइंट. अगर वो निकल जाता है ऊपर में तो 51,000 51,200 ऑन दी हायर साइड. So these are the levels that we are working with, and for both the index, and जब तक ये दो levels जो हमने mention किए उसके ऊपर है, निफ्टी में 23,333 and बैंक निफ्टी में 50,000 जो एक psychological number भी है, तो जब तक उसके ऊपर है bias should be positive to range bound. So the outcome is the more important event at 10 a.m. So we'll see how things pan out post the policy decision. So आई थिंक, और कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें तो एक सेक्टर एज अ होल सीमेंट पैक इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. उसमें से एक स्टॉक है विच इज जेके सीमेंट. सो अगर मैं वीकली स्केल पे बात करूं, वी हैव इनिशिएटेड अ सीडीआई आइडिया ऑन जेके सीमेंट. सो अगर वीकली स्केल पे देखें तो द स्टॉक हैज गिवन अ रेंज ब्रेकआउट ऑफ ऑलमोस्ट 6-7 months. So, or it is holding above 4,800, which is very good. And ऊपर में I think 4750 के support से you can buy JK Cement as a CDI idea. It's a positional idea. So 4,700 के support से look for 5,150 and 5,200 on the higher side in JK Cement. So one stock that is we are sharing as a CDI idea is JK Cement. We have already flashed it and our open call. And नीचे में 4,700 4,750 के support से look for 5,150 5,100 5,150 on the higher side in JK Cement. The stock has given a range breakout of 6-7 months and weekly scale पे almost record high closing है. अब तक अगर आज का close 4,800 के ऊपर आएगा तो that would be the record high closing for JK Cement. So एक CDI idea we have shared. And अगर intraday trade अगर कोई देखे तो I'll quickly see if I find something. There were a couple of stocks on our radar. One is Bharti Airtel. I think yes, Bharti Airtel can be considered as intraday trade. So post yesterday's result outcome, the stock has given a very strong range breakout. So आज intraday per se, one can buy Bharti Airtel at current market price, that is 1696.95, keeping a support of 1680 and look for target towards 1720 and 1730 on the higher side. So Bharti Airtel was a stock on our radar, and it has given a range breakout. Of intraday traders can buy at CMP, that is 1696, keeping a support of 1680. Look for 1720, 1725 on the higher side. This is purely intraday trade and it's not any position. The positional trade लेना चाहते तो even that is good, but we are suggesting as an intraday, purely intraday play. So एक stock CDI idea we have shared, that is JK Cement, which is roughly has a time horizon of 2-3 weeks, and Bharti Airtel, which is an intraday trade. Current market price is 1695.96, 1680 के support से look for 1720.25 on the higher side.
So we have shared index levels, जो policy outcome है, what is the expectation that the street is working with, and what the commentary would be like. That would be more important than the policy stance, and the inflation that they are working with, that would be more important going forward. Nifty में 23,333 crucial support, and Bank Nifty 50,000 immediate support trading per se. उसके नीचे 49,800. So these are the two supports. ऊपर में 50,555 अगर निकल जाता है, then another 500-600 point की एक further rally देख सकते हैं Bank Nifty में. So we have shared levels, we have shared the stocks intraday and positional. अगर कोई और stock I think radar पे रहेगा, तो I'll definitely come across and share. अगर कोई strategy समझ में आती है, तो we'll definitely share the same. So I think Anuj, we can take few queries if we have, and in the meantime, if we get any another opportunity with regards to intraday trade, then we'll definitely share the same. I'll just scroll up. So Chola Finance 1380 call bought at 46. I think Chola Finance is relatively good. तो अगर कॉल लिया है तो स्टॉक has given a good range breakout. एक गैप अप के बाद 3 दिन का कंसोलिडेशन है, इनसाइड बार है, तो मल्टीपल इनसाइड आज इनसाइड बार है. तो आई थिंक नीचे में जब तक 1360 नहीं ब्रेक करता, आई थिंक शुड कंटिन्यू टू होल्ड योर कॉल ऑप्शन. स्टॉक अगर 1400 के ऊपर निकल जाता है, तो यू विल मेक वेरी गुड मनी इन योर कॉल ऑप्शन. सो स्टॉक के 1360 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. अगर 1360 ब्रेक करता है, तो वी शुड एग्जिट योर पोजीशन इन द कॉल ऑप्शन ऑफ चोला फाइनेंस. बट टिल देन यू शुड होल्ड. ऊपर में अगर 1400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो स्टॉक कैन रैली अनदर 4-5%. तो यू विल मेक गुड मनी इन दैट. Sir, your view on Hyundai? I think Hyundai recently listed है, but relatively short price history है, but I think it's relatively better place. I think post the numbers, the stock has seen sharp up from 1650 to 1850, और 200 पॉइंट के रैली के बाद, 2 दिन कंसोलिडेशन के बाद आज फिर एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहे हैं. तो जब तक आई थिंक आज ब्रेकआउट आ जाता है 1850 के ऊपर, और अभी फिलहाल 1852 के आसपास चला, अगर यही क्लोजिंग आती है, तो स्टॉक कैन रैली अनदर 70-80 points on the high side. So 1880 is the next, 1925 is the next level that could be a hurdle. So keeping a support of 1820, you should hold your position in Hyundai and look for 1920 on the high side. So PC Jewelers? I think PC, I think best avoided. I think it's a penny stock. I think you should avoid. I think Titan is the best play in jewelry. I think Titan should be your only stock in your portfolio if you want to be in this segment. So Titan is best placed and will definitely do better than PC Jewels. अगर आपका position है, तो I'll give you a support. L14 का support है, but I don't think ऐसा कोई major setup है in PC Jewels. अगर नहीं है पोजीशन, तो बेस्ट अवॉइडेड. शिफ्ट टू टाइटन, व्हिच इज द बेस्ट जूलरी स्टॉक. So you view on CDSL? I think CDSL post the numbers, it has seen a sharp gap down, और relatively नीचे की तरफ ही होल्ड कर रहा है. बट नीचे में एक थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन तो है, although it's too early to say कि बेस फॉर्मेशन हो गया है. पर जब तक 1250 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो दैट इज 1250 1280 इज इमीडिएट सपोर्ट फॉर CDSL. एंड ऊपर में 1360 और 1400 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है. तो आफ्टर अ शार्प करेक्शन द स्टॉक विल कंसोलिडेट. अगर फर्दर फॉल नहीं आता है बिलो 1200, तो द स्टॉक कैन कंसोलिडेट इन दिस जोन ऑफ 200 पॉइंट, वेर इन 1200 के आसपास 1240 का नीचे में सपोर्ट है, एंड ऊपर में 1400 के आसपास रेजिस्टेंस है. तो ये 200 पॉइंट में कंसोलिडेटिव मूव ही रहेगा. फ्री फ्लो कोई
सेटअप नहीं है एज ऑफ नाउ. अगर आपका पोजीशन है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 1200 एंड लुक फॉर 1380 एंड 1400 ऑन द हायर साइड. अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आई थिंक 1200-1250 के आसपास इज अ गुड जोन टू बाय सीडीएस. Sir, any intraday play for RBI? RBI आई थिंक पॉलिसी प्ले इज अ बिट रिस्की क्योंकि स्विंग दोनों साइड रहता है. तो आई थिंक जस्ट टू प्ले एन इवेंट डज नॉट मेक एनी मेजर सेंस बिकॉज आपका स्टॉप लॉस दोनों साइड पे भी हिट कर सकता है. बिकॉज वी कैन सी एटलीस्ट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट का स्विंग ईदर साइड. सो the move are very quick and very swift. So by the time you try to exit, the option could do a very volatile swing. So as of now, I think bias positive है in bank nifty. तो अगर आपको लेना है तो I think bull call की तरफ जा सकते हैं, wherein 50,500 का कॉल लेके 51,000 का कॉल बेच सकते हैं. ये स्प्रेड कुछ 180-200 रुपए का कॉस्ट में बैठ जाएगा. तो 200 would be your risk and 300 would be your profit. तो अगर आपको पोजीशन लेना है तो that would be via spread would be a better and safer option wherein theta decay won't hurt क्योंकि monthly option in bank nifty and relatively better placed है bank nifty. तो and आपको easily exit opportunity भी मिल जाएगा. You will not get a decay factor in this. So अगर 200 पॉइंट की भी कॉस्टिंग है तो the worst could be you will lose 20 points in the spread. And if it works, then you'll make good money in that. So अगर किसी को एक event play करना है तो do it with a spread rather than naked call or put option. So bias हमारा positive है for the timing till it holds 50,000 के ऊपर. So do a 50,500 and buy and 51,000 call sell a bull call spread 500 points. So you view on Axis Bank? I think Axis has made a decent bottom near 1000 के आसपास. एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है 980,000 के आसपास. सो आई थिंक और वो गैप फिलिंग की तरफ जा रहा है जो उसके रिजल्ट के बाद जो गैप डाउन हुआ था और नीचे तक की रिकवरी आई है. बट एज ऑफ नाउ नीचे में 9890 का एक सपोर्ट है. जब तक उसके ऊपर है आई थिंक यू कैन सी 1035-1040 ऑन द हाई साइड इन एक्सिस. सो 990 के सपोर्ट से लुक फॉर 1040 ऑन द हाई साइड. So view on banking sector. So banking sector, I said I think 50,000 sector as a whole में अगर देखें तो Kotak is relatively, Kotak and ICICI Bank are relatively better placed. Kotak is almost, I'll show you the chart. It has given a break gap up and almost एक consolidation में है. तो अगर weekly scale पे भी देखें तो almost 5-6 साल का एक range है कोटक में. तो ऊपर में जब 1950 निकल जाएगा कोटक में तो यू कैन सी almost 7-8% का मूव in Kotak. So wait for a breakout in Kotak. So Kotak, ICICI Bank and HDFC Bank. These are the three major components of Bank Nifty and banking sector as a whole. So result wise also हम देखें तो Kotak and ICICI Bank reported decent results. बाकी कुछ mix थे. Small PSU banks जैसे Bank of Maharashtra है, PNB है, Bank of Baroda, I'm not Bank of Baroda, Canara Bank hai. So these small PSU banks, Indian bank hai, they reported decent results and better results than the private majors. But private bank mein the scale is a bit higher. So Kotak and ICICI are well placed. Even HDFC Bank decent है, एक range में है, but नीचे में almost 1650 के आसपास सपोर्ट आ जाता है. ऊपर में 1750 का एक रेजिस्टेंस है. तो ओवरऑल ये तीन बैंक रिलेटिवली बेटर है एंड ये तीन बैंक के ऊपर ही पूरा बैंक निफ्टी का वेटेज है. सो स्टिल दी स्टॉक्स डू वेल, द इंडेक्स वुड डू रिलेटिवली वेल. सो ये तीन स्टॉक पे हमेशा फोकस रहना चाहिए एंड दे आर रिलेटिवली वेल प्लेस्ड. तो जब तक 50,000 बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तो बायस पॉजिटिव की तरफ रखे तो दैट वुड बी गुड. Sir, I bought ICICI 1300 call at 14.85. 13.85.
Okay. Which call? I just missed the strike. 1300 call. 13. Okay, 13 call. So I think जब तक 4 दिन से एक रेंज में है तो ऊपर में 1280 निकल जाएगा तो यू विल डेफिनेटली मेक गुड मनी इन आईसीआईसीआई बैंक कॉल ऑप्शन। और नीचे में एक सपोर्ट है 1255 का। तो जब तक 1255 के ऊपर है आईसीआईसीआई बैंक, यू शुड होल्ड योर कॉल ऑप्शन इन आईसीआईसीआई बैंक। एंड ऊपर में 1280 के ऊपर निकल जाता है अगर आज या गोइंग फॉरवर्ड, तो विल डेफिनेटली मेक वेरी गुड मनी इन योर कॉल ऑप्शन। सो कीप अ सपोर्ट ऑफ 1255 कैश लेवल in ICICI Bank. Sir, your view on JSW Steel? I think metal as a whole थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है एंड मेनली बिकॉज ऑफ द शार्प अपमूव इन डॉलर इंडेक्स जो ऑलमोस्ट 103 से 110 हो गया है। सो और ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है तो डॉलर इंडेक्स हैज अ इनवर्स रिलेशन विद मेटल्स। सो अगर डॉलर बढ़ता है तो मेटल्स करेक्ट करता है एंड व्हेन द डॉलर इंडेक्स कूल्स ऑफ द मेटल स्टॉक यूजुअली डू वेल। So dollar index has cooled off from 110 levels to 107 के आसपास है। तो this cool off has led is the reason why metal stocks are थोड़ा सा gaining कर रहा है। And I think JSW Steel is looking decent। 950 के सपोर्ट से अगर आपको ऊपर प्ले करना है इंटरडे पर से और 1-2 डेज के पर से, तो 950 के सपोर्ट से आप बाय कर सकते हैं। Look for target towards 975 and 980 on the higher side. Sir, your view on Zomato? Okay, so Zomato is one of our very favorite counter after 300 से almost 200 100 पॉइंट का करेक्शन आया है, नीचे से रिकवरी आई है, तो आई थिंक एक बॉटम आउट तो नहीं बोल सकते बट एक कंसोलिडेशन मूव है। तो इमीडिएट टर्म में अगर ट्रेडिंग पर से है तो 227 के सपोर्ट से लुक फॉर 240 ऑन द हायर साइड। बट अगर इन्वेस्टमेंट पर से है तो यू शुड डेफिनेटली लुक टू ऐड इन दिस डिप, इट्स अ वेरी गुड dip to buy for 2-3 years का time horizon है। I always say it's a must have in your portfolio. So trading पर से है तो 227 के support से look for 240। अगर investment है तो you should definitely consider and use this dip to buy. So Suzlon? I think Suzlon post the result 3-4 दिन बाय सर्किट था, अभी ऑलमोस्ट 5 दिन से लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, तो गैप फिलिंग की तरफ है। तो आई थिंक इट वुड slow and steadily fill this gap area. तो I think the stock can correct more towards 5180। तो I think अगर आपका long है ऊपर में तो keep a support of 53 and hold। अगर नहीं है तो wait for a better entry towards 51 के आसपास। 5150 5170 is a good re-entry point in Suzlon। ये 5 दिन से 6 दिन से लोअर हाई लोअर लोज ही बना रहा है, तो stock can correct further towards this gap area, that is 5170 5180। Sir, Z Entertainment? I think Z has been very beaten down, and I think post the numbers also the stock didn't found any positive in that। So I think एक inverted pole and flag का पैटर्न है ऑन द डेली स्केल। अगर नीचे में 106 के नीचे 107 के नीचे क्लोज आता है तो स्टॉक कैन करेक्ट फर्दर टुवर्ड्स 100 और 95 लेवल्स आल्सो। तो अगर आपका लॉन्ग है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 107 और 106.5 एट बेस्ट। 107 इज द बेस्ट स्टॉक अगर लॉन्ग है तो, अगर नहीं है तो डोंट गेट इनटू Z। Sir, NTPC for next 6 months? I think NTPC is a good slow, थोड़ा snail pace पे चलता है, although the market cap is very high and but still like dividend yield और 3-4% का दे देता है, तो I think NTPC is a safe bet। ज़्यादा low beta है तो it won't be a very volatile, it won't bring volatility in your portfolio। तो I think अगर
6-7 महीने का आपका टाइम हराइजन है, तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 300 एंड लुक फॉर 340 350 ऑन द हायर साइड. तो अगर 300 जब तक 300 के ऊपर है, आई थिंक बायर शुड बी पॉजिटिव इन दैट एंड लुक फॉर 335 340 ऑन द हायर साइड. I think Bharti Airtel we suggested तो थोड़ा सा एक अपटिक आया है 5-6 पॉइंट का. I think you should definitely hold for 1720 के टारगेट के लिए purely intraday. 1702 हुआ है, तो I think should definitely hold for 1720. Sir, KPI Tech. तो KPI Tech रेंज में है, तो नीचे में इमीडिएट में 1400 एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 1470 एक रेजिस्टेंस है. तो एक 70 पॉइंट्स का रेंज में ही ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 7 दिन से. तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट आता है 1475 के ऊपर, देन द स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 1520 1550 ऑल्सो. तो अगर आपका लॉन्ग है या आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 1400 एंड लुक फॉर 1475. अगर 1475 निकल जाता है तो 1520 1525 के टारगेट के लिए लुक देख सकते हैं केपी टेक. शेफली जी, we will definitely update you on the commodities sessions. अभी तक वो schedule नहीं हुआ है, जैसे वो schedule होंगे we'll update you. तो एक शार्प अपटिक आया है भारतीय एयरटेल में ऑलमोस्ट 1705 की तरफ. तो आई थिंक ऑलमोस्ट 706 का हाई किया है. और 10 पॉइंट्स इन द सेशन वी हैव गेन्ड. 1695 के आसपास था, 1706 हुआ है. तो I think you should trail your stop to 1690 or 1695 and hold and look for 1720. That's the best I can say. So guys, please trace your stop loss. We are in profit in the trade of Bharti Airtel. So let's trail our stop loss for that. Yes. So guys, that will be all for today's session. Thanks a lot everyone for joining in. Thank you Nikon sir for joining in. We'll definitely update you about the trades in the second half of the session. Thank you everyone. Thank you everyone. Have a good day.